अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम ऐसे पढ़ रहे हैं। ऐसे नंबर है 39, इन्फ्लेशन, राइजिंग ऑफ प्राइसेस। आउटलाइन फॉर बीए स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए आउटलाइन की जरूरत नहीं होती। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल बोर्ड्स के पास पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर का इंग्लिश एक मुकम्मल सिलेबस अपलोड कर दिया हुआ मिस्टर चिप्स के गुज़िश्ता 15 सालों में आने वाले रिपीटेडली 50 क्वेश्चंस वो भी अपलोड किए हुए हैं। चैप्टर वाइज भी अपलोड किया हुआ है। एसे, स्टोरीज, लेटर्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपलोड किए हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। द प्राइसेस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली। जिंदगी की जरूरियात की कीमतें मुसलसल तौर पर कीमतों में मुसलसल तौर पर इजाफा हो रहा है। दे आर पोजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री। वो मुल्क में हर शख्स के लिए संगीन मसाइल पैदा कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस हैज बिकम यूनिवर्सल प्रॉब्लम। कीमतों में इजाफा एक आलमगीरी इजाफा मसला बन गया है। द प्रॉब्लम अज्यूम्स इन एन एक्यूरेट फॉर्म इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ये इजाफा इस अंदाजे को इस मसले को जज किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन आर कंट्री बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप। ज्यादातर मुल्क में ज्यादातर लोगों की आबादी लो इनकम वाले लोगों से ताल्लुक रखती है, ग्रुप से ताल्लुक रखती है, तबके से ताल्लुक रखती है। एज इट इज वाइजली सेट, इन्फ्लेशन मेक्स द wealthiest people richer and masses poor. Usually they have very meager sources of income. आमतौर पर उनकी आमदनी बहुत कम होती है। वेरी ऑफन द इनकम ऑफ पीपल इज फिक्स्ड। अक्सर जो है लोगों की इनकम अब आमदनी फिक्स होती है। देयरफॉर दे आर हार्ड हिट बाय द हाई प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स विच रजिस्टर a rise every week and every month। जिसका नतीजा और हर महीने हर साल जो है हर हफ्ते कीमतों में बहुत सी ज़रूरी चीज़ों में रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों में की कीमतों में इजाफा होता रहता है। द रिजल्ट इज़ दैट जिसका नतीजा ये होता है दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर पीपल इज़ डिवेल्डिंग डे बाय डे। जिसका नतीजा ये होता है कि गरीब लोगों की म्यार ज़िंदगी गिरता जाता है, दिन ब दिन गिरता जाता है। एज समवन हैज वाइजली सेट, किसी ने क्या खूब कहा है, द इन्फ्लेशन इज द वन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एंड दैट कैन बी इम्पोज्ड विदाउट legislation. Inflation has an adverse effect in on different sectors of the society. Inflation कीमतों में इजाफा माशरे के मुख्तलिफ तबकात पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नो सफिशेंट मीन्स टू बाय द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बहुत से लोगों के पास ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदने के ज़्यादा बेहतर ज़राए नहीं होते। दे आर कंपेल्ड टू यूज़ अनफेयर मीन्स टू हैव देम। उन्हें गैर कानूनी ज़राए जो है ना, गैर अखलाकी ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। इन दिस वे द सोसाइटी इज ट्रबल्ड बाय पिक पॉकेट्स, थीव्स एंड रॉबर्स ईटीसी। इस तरह से जेब तराशियों, चोरों, डाकुओं की मुआशरे में मसाइल पैदा हो जाते हैं और इजाफा हो जाता है। Those government servants who cannot make both ends meet become corrupt। वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो अपने ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते वो भी करप्ट हो जाते हैं। दे अब्यूज देयर पावर्स एंड एक्सेप्ट ब्राइब। वो अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं और रिश्वत लेते हैं। इन दिस वे दे प्रमोट इनजस्टिस एंड क्रूलिटी इन नेशनल लाइफ। वो कौमी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी और जुल्म को तश्कील देते हैं, में इजाफा करते हैं। द इन्फ्लेशन इज़ लाइक टूथपेस्ट, वंस इट इज़ आउट यू कैन हार्डली गेट इट बैक अगेन। Rising prices also affect the national life in the economic field। कीमतों में इजाफा माशी शोबे में भी कौम पर असरअंदाज होता है। The businessmen think of adulteration, black marketing and other methods of maximize their profits। कारोबारी अशखास ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, ब्लैक मार्केटिंग का और दूसरे अपने
मुनाफे को बढ़ाने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सिंस द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन, इस तरह से आम आदमी की पहुंच से भी आम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज ऑन फॉलिंग ग्रेजुअली, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता म्यार जिंदगी गिरता जाता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कॉज राइज इन प्राइसेस, बहुत से वजूहात हैं जो कीमतों की में इजाफे की वजह होती हैं। समन हैज वाइजली सेट the inflation is not only the unnecessary for economic growth, as long as it exists, it is the enemy of economic growth. Enemy of economic growth. First, the most important of these is the increase in population. इनमें सबसे ज़्यादा ये वजह आबादी में इजाफा है। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट, किसी भी मुल्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। बट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज डू नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट, लेकिन उसके मुआशी ज़राए उस लिहाज से नहीं बढ़ते। इट रिजल्ट्स इनटू इन्फ्लेशन, इसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है। इफ द डिमांड इज हायर दैन द सप्लाई, अगर तलब रसद की निस्बत ज़्यादा है, द गुड्स विल बी नेचुरली सोल्ड एट द हायर प्राइसेस, तो चीज़ें कुदरती तौर पर महंगी बेची जाएंगी। समटाइम्स गवर्नमेंट इम्पोजेज हायर टैक्सेस ऑन certain commodities so that their prices go up। बाद गवर्नमेंट टैक्सेस रोजमर्रा की चीजों पर, खास चीजों पर टैक्स आयद कर देती है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है। द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफन लीड टू होर्डिंग, स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द एसेंशियल गुड्स। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज जखीरा अंदोजी पैदा करती है। होर्डिंग, जखीरा स्मगलिंग की वजह से स्मगलिंग होती है, जखीरा अंदोजी होती है, और ब्लैक मार्केटिंग होती है जरूरी चीजों की। As someone has wisely said, inflation is a form of tax, a tax that all collectively must pay. Thirdly, if a businessman is monopoly has a monopoly in the production and sale of a certain commodity, he can raise its prices whenever he desires। अगर कोई बिजनेसमैन चीज़ों की, खास चीज़ों के पैदावार में और बेचने में मोनोपली रखता है, तो वो जब चाहे अपनी चीज़ों की कीमत में इजाफा कर सकता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यूजली कॉज इन्फ्लेशन। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में तरक्की की चीज़ें की कीमतों में इजाफा होता है। द फंड्स दैट एंड द plans that acquire the funds and plans that acquired from foreign countries are invested the funds and plans that acquire from फॉरेन कंट्रीज आर इन्वेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए गए फंड्स वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, मनसूबों पर लगा दिए जाते हैं। दे इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द कंट्री एंड कॉज इन्फ्लेशन, इसकी वजह से पैसे मुल्क में आते हैं और इन्फ्लेशन का वजह बनते हैं। एज समवन हैज वाइजली सेड, इन्फ्लेशन इज एज वायलेंट एज द मगर fighting as an armed robber and deadly as a hitman। Our first duty should be to check the birth rate. We should make a vigorous propaganda in favor of family planning. Second, the government should not pose so many taxes, levies, duties, or surcharges on those commodities which are used by the common man and which are considered necessary for human life। Have a nice day। Allah Hafiz। AG अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।